Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gann and Briggs, and last, characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1: Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point: logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment. And last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, यूजीसी नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point. Teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Means teaching is ऐसा communication है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके, लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा process है जिसमें learner, teacher, curriculum and other variable जो एक organized एक systematic way में organized किए जाते हैं एक predetermined पहले से निर्धारित goal को achieve करने के लिए. Teaching is an important part of the process of education. Teaching एक बहुत ज़रूरी part है education का. Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. Teaching का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना. Now, Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए. नाउ कम टू द पॉइंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. अ टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर वर्क. Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gann and Briggs, and last, characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1: Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude.
Now 6 point logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, and last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, यूजीसी नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point. Teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Means teaching is ऐसा communication है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके, लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, कुरिकुलम एंड अदर वेरिएबल जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं एक प्री डिटरमाइन पहले से निर्धारित गोल को अचीव करने के लिए. टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. टीचिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का. Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. टीचिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना. Now, Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy and creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए. नाउ कम टू द पॉइंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. अ टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर वर्क. Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gaine and Briggs, and last characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1. Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, and last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, यूजीसी नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point.
teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. मीन्स टीचिंग ऐसा कम्युनिकेशन है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, कुरिकुलम एंड अदर वेरिएबल जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं एक प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित गोल को अचीव करने के लिए. टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. टीचिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का. Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. टीचिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना. नाउ Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए. नाउ कम टू द पॉइंट. ऑब्जेक्टिव of teaching. A teacher must be aware of his or her work. Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gaine and Briggs, and last, characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1. Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, and last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, UGC नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point. Teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. मीन्स टीचिंग ऐसा कम्युनिकेशन है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use.
टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए। Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, कुरिकुलम एंड अदर वेरिएबल जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं एक प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित गोल को अचीव करने के लिए। टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का। Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. टीचिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना। Now, Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अ टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर वर्क। Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gaine and Briggs, and last characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1: Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment. And last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, यूजीसी नेट जून 2020 के लिए। Now come to the point, teaching aptitude. In teaching aptitude we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Means teaching is ऐसा communication है 2 और 2 से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके, लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं। Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए। Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर, कुरिकुलम एंड अदर वेरिएबल जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं एक प्री डिटरमाइंड पहले से निर्धारित गोल को अचीव करने के लिए। टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का।
Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. टीचिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना. Now, Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए. Now, come to the point. Objective of teaching. A teacher must be aware of his or her work. Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1, Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gaine and Briggs, and last, characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1: Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, and last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, UGC नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point. Teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Means teaching is ऐसा communication है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके, लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा process है जिसमें learner, teacher, curriculum and other variable जो एक organized way, एक systematic way में organized किए जाते हैं एक predetermined, पहले से निर्धारित goal को achieve करने के लिए. Teaching is an important part of the process of education. Teaching एक बहुत ज़रूरी part है education का. Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skills. टीचिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को बताना, डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स को उनके डेवलप करना. Now, Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in creative expression and knowledge. टीचिंग एक ऐसा कला है जो आनंद को जगाता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज में, ज्ञान और एक्सप्रेशन के जरिए. Now, come to the point. Objective
of teaching. A teacher must be aware of his or her work. Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about General Paper 1 Teaching and Research Aptitude, which is compulsory for UGC NET June 2020, in which concepts, objectives, Bloom's taxonomy, Gaine and Briggs, and last, characteristics of teaching. Now, contents of General Paper 1: Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, in which reasoning, series, classification, code, relationships, directions and test, arrangement, mathematical aptitude. Now 6 point, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, and last one is higher education system. Paper pattern. Paper 1 considered 100 marks for 50 question, which all are compulsory, and time is 1 hour. मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के पेपर 1 में 1 घंटे के लिए, यूजीसी नेट जून 2020 के लिए. Now come to the point. Teaching aptitude. In teaching aptitude, we are going to learn about concepts of teaching, objectives of teaching, levels of teaching, characteristics of teaching, and last one is basic requirements of teaching. Now, concepts and definition of teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Means teaching is ऐसा communication है दो और दो से ज़्यादा में, जिसमें वो लोग इंटरेक्ट करके, लर्नर और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आइडियाज़ देते हैं, टीचर लर्नर को आइडियाज़ देते हैं, उनको सिखाते हैं. Teaching is to full in the mind of the learner by information and knowledge of facts for future use. Teaching is ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर के दिमाग में इंफॉर्मेशन और नॉलेज फीड किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, भविष्य के लिए. Teaching is a process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. Teaching एक ऐसा process है जिसमें learner, teacher, curriculum and other variable जो एक organized एक systematic way में organized किए जाते हैं एक predetermined पहले से निर्धारित goal को achieve करने के लिए.